You were such a young girl. He's much older than you. तो आपको कुछ hesitation नहीं था नहीं, कि I he's think older people might- or he's married? ये नहीं, सब नहीं था? मैरिड का होता अगर if I was the home breaker. हाँ. But I already knew what the situation was. So it's not like I broke a home. So I was okay with Not that. at all, yeah. That was not my worry. But I've always got along better with older people somehow. Okay. Men or women, I don't know, maybe I was too mature for my age. क्या था? Young मेरे age के boys मुझे ना मतलब mentally tuning ही नहीं होती थी. Okay, okay. So yes, he was. I mean, he was a little much older, but I didn't कुछ face ज़्यादा that. फर्क नहीं. नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा. Okay. And what is it about Ramesh ji that really attracted you ultimately? His personality. He's I a saw- very lovable, very Yes. likable person. Any woman would be attracted So to him. Let me put it I that way. saw a man who was so big, so huge, लेकिन एक मिनट के लिए भी कभी भी किसी के साथ भी वो स्पॉट बॉय भी हो कोई भी हो मैंने रमेश जी को ऊंची आवाज़ में या मिसबिहेव करते या उसको रिस्पेक्ट देते हुए ना देखा एंड दिस वाज कमेंडेबल बिकॉज यू नो लोग सक्सेस के साथ बदल जाते हैं Yes. बहुत बदल जाते हैं एंड दे हैव सच एक फिल्म हिट हो जाती है तो उनकी ऐसी एयर्स होती हैं जैसे तो यू नो वी हैव अराइव्ड एंड हियर वाज अ मैन हु हैड गिवन हिट आफ्टर हिट यू नो बट वाज सो हम्बल Absolutely. और इतने पोलाइट इतने प्रॉपर यू नो लेडीज आए तो वो खड़े हो जाते थे मतलब बिल्कुल तमीज़दार आई लाइक्ड हिम एज अ ह्यूमन बीइंग Okay. You got attracted to I got attracted to the personality, to the person he was. Right, right. So did you say the first thing, or did he approach you, or was it mutual? I don't know, it just happened. Honestly speaking, मेरी इतनी clear memory भी नहीं है कि कैसे हुआ, कब हुआ, because But you हुआ. can't time it. हो गया. Yeah. But tell me how your parents are not from this industry. आपका कोई ताल्लुकात ही नहीं है with the नहीं. film industry. तो उन्होंने कैसे लिया? क्योंकि उन दिनों में सब लिखते थे आपके बारे में. But they they must have knew, been- but they knew that marriage was on the card. They knew that. For a while उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की इस बारे में because they didn't know कि कैसे बात करें इस बारे में. But finally he went and he met them and proposed marriage to me and with my parents' consent कि I want to. फिर date decide हुई. I think it was difficult for them पर उन्होंने कभी मुझे ऐसे बोला नहीं. अच्छा. Yeah, they were good parents. And tell me, what's it like to be married to a man older than you? कुछ नहीं. There's nothing that you. I There's don't nothing see- you'd like to tell any girl. No. See, like I said, मैं तो हमेशा से ही तो it depends on what your personality is. If you are not mature enough, then marrying a mature person could be a problem. Intelligence level and thinking level match नहीं करेगी. But luckily for me, he and I are on the same page for everything. And I come from a family where they had a lot of values, and I find Ramesh ji has a lot of values. So मेरे लिए वो transition बिल्कुल नहीं रहा. मुझे मतलब comfort zone था मेरे लिए. हम लोग भी उन्हें जानते हैं before शोले. हम लोग जानते हैं. And he has remained consistent. Consistent gentleman. Absolutely. Yeah. आपकी जिंदगी कुछ बदली after you became Mrs. Ramesh Sippy? Of course. बहुत बदली, बिल्कुल बदली. You know, for me, marriage was. I'm a little different. I'm an Aquarian. तो एक तो Aquarians वैसे ही बहुत ahead होते हैं. तो for me, marriage is just a paper. Commitment important है. तो जब मैं मतलब 3-4 साल we were dating and it's a long period. तो मैं जानती मेरी थी आपको उन दिनों में, आपकी पार्टी में भी आई हूँ, घर पे भी आई हूँ. घर पे भी आए हो आप. तो लोग मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, जल्दी से शादी करो, ये क्या कर रही हो तुम, ही विल लीव यू, मतलब देयर आर सच अट्रैक्टिव लवली अदर गर्ल्स आल्सो, मेन टायर, यू नो टायर हो गए, अभी 3 साल हो गए, 4 साल हो, क्या कर रही हो तुम. एंड आई वाज लाइक अरे भाई अगर छोड़ना है तो बेटर अभी छोड़ देना, शादी के बाद क्यों वो सब चाहिए तमाशा, नहीं चाहिए. इट्स ओके, आई एम वेरी सिक्योर.
अगर होना होगा लाइफ में, ये लिखा है तो यही होगा, और अगर नहीं होना है तो फिर मुझे चाहिए ही नहीं. It has to be on mutual terms. Yeah. He should want to be with me and I want to be with him. तभी वो रिश्ता चलता है. दोनों में से अगर एक पार्टी भी, I mean, if he is interested in other women, तो शादी हो या ना हो, correct. कोई फर्क नहीं पड़ता है. And touch wood, now we are married. 5 years that before and now married so many years. More than 30 years. I have not heard of any affair that Mr. Sippy has had. लेकिन उसके पहले बहुत सुना था. I don't care. But मैंने see, this is what I have to tell you. बिल्कुल सुना नहीं, मालूम था मुझे. Okay, होगा, but I know वो this बहुत much. कलरफुल आदमी थे before. But I know this much कि after meeting me, I don't know of any affair till today. या कुछ भी ऐसा कुछ भी मैंने नाम नहीं. तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन कम से कम 2 एक्ट्रेसेस तो को मैं जानती हूँ. ठीक है, होगा. जिनके But that is the रमेश जी past. का But that is the past. I don't want to talk about it. I would we all not like knew to. about it. I would not even comment it on it. And मैं I don't know, I उसमें, wouldn't expect you to comment on it. I was wondering whether that would make a difference to you कि ये इतना कलरफुल आदमी रहे हैं तो you're a little apprehensive about getting. I told you I'm not that kind of person. I'm very secure within myself. And if एक आदमी मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं भी फिर उसके साथ नहीं रहना चाहती. It's as simple as that. Yeah. मैं ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के बैठ जाऊँ, for what? Correct. I don't believe in that. And no regrets. No regrets at all. Not at all. That's right. Yeah, and I've seen the two of you. Oh, it's almost been grow wonderful. together. Yeah. I don't know ज़िंदगी कैसे निकल गई, मुझे तो पता भी नहीं चला. To be honest. You like traveling together? I love traveling together. I like having good meals. अच्छा खाना हम दोनों का शौक है. हम दोनों अकेले कम से कम हफ्ते में एक बार, minimum. कहीं ना कहीं जाएंगे. Just the two of us. अच्छा. We go out for a meal, and I value those. For instance, today I'm going somewhere from here. I will be going somewhere. Yeah. So we make that time. यार ये इस हफ्ते कहाँ जा रहे हैं? You know, that kind of a thing. Yeah. And it's special for us. Kiran, last question. What is it that has kept you and Ramesh ji going for so long? Touch wood. Common interest, I think affection and respect for each other. मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो वो नहीं चल सकता. तो शादी के बाद 34 साल हो गए. Next year you should be celebrating your 35th anniversary. Yeah, we got married in 91. Yeah. So, yeah. I can't even count. I don't even know कितने साल हो गए. But it's. Any special celebrations in mind? Haven't planned anything. मैं थोड़ी late planner ही हूँ. मतलब वो जब टाइम आएगा हो जाएगा, हो जाएगा कुछ ना कुछ. देश का नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. अभी रजिस्टर कीजिए.